everyone, this is Chinmay and Anurag back again, and today's video is not about the codecast, and because we are just curious to try the new Chinese LLM, not I mean yeah Chinese LLM called DeepSeek, and it is being quite popular recently. So we just wanted to try this online, and just in this video we will try to test its potential as a mid-level engineer. I mean, if we can do that. And today in this video, we are going to test the front-end capabilities, not the back-end. And maybe the next video for the DeepSeek, we will try to test its back-end capabilities. That's like, is that correct, Anurag? Yes, yes, Yeah. yes. So I think a fun fact I just came to know about DeepSeek is that it was actually started by the guys who has a hedge fund in China with the name of I think High Flyer. So basically they started as a trading firm and now they are moved to this business. Hmm. So ये मुझे पता नहीं था. Okay. so I But think today's our today's the context is that I think we are going to ask this DeepSeek to create some program on the fly and let's see how does it performs and what is the the user satisfaction a developer or a programmer can get about out of it. yeah, correct. Then basically, like today, like we are going to create a Flappy Bird game, Mhm. like a browser-based game using JavaScript, not JavaScript, but yeah, reactjs with TypeScript and Tailwind CSS. So we won't be doing anything. We'll be instructing DeepSeek ki like do this or do that. That's the only thing we are going to do as a engineer in this video, and we assume that DeepSeek will be able to create that Flappy Bird game without maybe errors, or like if there are some errors, still we won't be like trying out to debug or like solve the error. Again we will ask DeepSeek to do that. So basically हम कुछ नहीं करेंगे, everything will be doing everything will get done by the DeepSeek. Anyways, so इस वीडियो से like how you can utilize this video or this knowledge. एक तो we are going to prompt it like we do in a day-to-day basis, like we personally do in a day-to-day life. So you can learn our prompting patterns, so that will help you a lot to use LLM like in a correct way. And because like अगर एक ही चीज़ को solve करने के लिए like there are two person जिसको one is very good at prompting as an engineer, not a prompt engineer, prompting as an engineer, or one is one is also an engineer but not good at prompting. So they might get very different solution in terms of efficiency or the capabilities for the same problem from the same LLM. So that's how prompting can completely change your results if you are good at it. So we won't be like faking we won't be faking like we are beginners. So we are just going to use it as it is. So yeah, let's start, Anurag. So we open Yeah. this DeepSeek. Yeah, So this Chinmay, yeah. Huh? I'm having like a bad cold these days, so I will be like mostly as a silent observer. You can continue. Oh, okay. ओके सो डीप सिंक के बारे में एक चीज़ है कि लाइक इट कैन थिंक बेसिकली लाइक ए ह्यूमन, लाइक डीप थिंक. अगर इस डीप थिंक बटन को यू प्रेस इट, तो it can solve reasoning problems. Basically it can think. So that's a very interesting feature of this, and I think right now other LLM are not having this feature, maybe like on the like front end, but maybe like they might be building it behind the scene. Anyways, so I'm going to try a deep think as well. So press the button and now start. So act as a JavaScript game developer for more than 5 years experience, and help me to build a Flappy Bird game for the what happened? क्या हुआ? Can we ask this to be act as a game developer for at least a experience for more than 100 years or 50 years? um,
Yeah, that's a nice way to test. It's like रीजनिंग कैपेबिलिटीज. अगर लॉजिकल है तो इसका आंसर, पहला आंसर ये होना चाहिए कि नो, दैट्स नॉट 50 पॉसिबल. years, 50 years is not possible because I just born in 2023 or 2022, whatever the date is. बट कैन लाइक बेस्ड ऑन द नॉलेज इट कैन एक्ट. बट इसका आंसर ये होना चाहिए कि अगर हमने बोला कि लाइक मान लो जावास्क्रिप्ट कब आई थी, तो वी जब ये तो वी कैन से लाइक 100 years एक्सपीरियंस. Mm, तो इट शुड mm. से कि तब तो जावास्क्रिप्ट नहीं आई थी भाई. What the hell? एक बार Hell देखे are you सर talking यार. So about? let's after this thing we try to make Okay, act him okay. as a highly experienced 100 years of. 100 years. Let's see. Okay, so Flappy Bird game for the browser. We just Mm, want a simple game, and you can use normal UI elements like box, long box, like uh, circle as a bird, and boxes for the pillars. Yeah, whatever it is. So ठीक है. And provide complete code, and it should be updated. Please don't provide any deprecated code. We have already created a nextjs project using TypeScript and Tailwind CSS with the latest nextjs version. So everything should be in TypeScript. Let's start. Let's see. Okay, now thinking. This is like fucking awesome. Thinking वाला part बड़ा सही है इसका. हाँ, उसको पाइप बोलते हैं, पिलर नहीं बोलते. ठीक है. Really thinking like collision detection is crucial for the bird check if the gun was bound for pipes to exercise. Whatever. I help to create simple project components flappy game.tsx. Let's create a folder component. Components and then flappy game.tsx. ठीक है. So this is the code, okay. Context, canvas context ठीक है. But pipe score is came over and frame ID read only. ठीक है. Okay. Because मैंने TypeScript and canvas में काम किया हुआ है अपने in my previous company, so I have that idea how to use canvas, nextjs. ठीक है. But physics, okay. Remove off-screen pipes. Fine. Let's try the code. Like try this code as it is. Let's see. mm. So we'll just copy and paste. Second file we have. Now you can use the component and page. For example, modify this home page. ठीक है. Okay. See the home page. Okay. That's all. अच्छा, एक सिंगल फाइल में बना के दिया है ना इसने. Mhm. Okay. Let's do. I think home page पे हैं. गेम ओवर. फ्लैपी बर्ड. गेम रिस्टार्ट कैसे हुआ? Okay. Okay, it's working. Yeah, yeah. Can you see the screen? हाँ. अभी दिख रहा होगा ना? हाँ. What? Okay. If I start, then okay, it's kind of working.
वाओ With the up key say it's working, what? हाँ स्पेस की से मेरे केस में Space, स्पेस okay, space, okay. fucking difficult यार हट not even See, ask him to ask increase the this gap between the to increase the gap in pipes and decrease the gravity. ah Both two things. Ask him to ask it, yeah, whatever it is. I don't know. I do not want to mispronounce the gender because this, this is a problem, yeah. क्या So प्रॉब्लम मैं बोलता हूँ क्या बोलना है बता ask it to increase the gap in pipes and decrease the gravity. okay by the way the game is fucking irritating but Game is irritating, yeah. Fluffy, but I don't know why it just went viral and addictive game है okay it's working nice let's do some changes can you please increase the gap between pipes and decrease the gravity. decrease फिर ये I think if it will increase the pipes in those gaps, अपने को vertical वाला gap भी चाहिए, horizontally and vertically both. and please set adjust the screen display size for the game view because it feels like I am playing in the mobile even when I'm on the browser page. Let's see. Thinking now, nice. But yeah, it was impressing. एक बार में he did it. Very nice. ठीक है तो जो हमने जो वीडियो बनाया था about LLMs and AI I think we need to take our words back थोड़ा partially we have to take our words back कि नहीं ऐसा नहीं था After 2 days or 3 days only, this AGM was released. We were talking about AGM only, and AGM released. तो थोड़ा सा लगता है कि वी हैव टू टेक आवर वर्ड्स बैक कि नहीं ऐसा भी नहीं है कर सकता है भैया अगर आप इससे अच्छा होना पड़ेगा आपको वरना गए इन द गेम मैनेजर क्लास पाइप नंबर ठीक है नंबर पाइप गैप ओके आई हैव लेट मेक इट 200 रीड ओनली पाइप विड्थ 50 ठीक है और पाइप स्पेसिंग 250 ठीक है द बर्ड You are sharing. I can see the DeepSeek only. हाँ तो ये सेम ही कोड मैं उसमें लिख रहा हूँ करूँ कैसे देख लो it's your choice. Wait. In the bird initialization कहाँ पुट करूँ इस कोड को पूरा ढंग से बताना It's the bird initialization this in the floppy game components use effect increase from 400 to 100 okay what the fuck is floppy game Is there anything words weight or something? Word mass or word weight? check collision check score game over floppy game okay so you use effect do it 600 and do it slightly larger bird यहाँ ठीक है this like increasing the radius for the bird कि थोड़ी सी उसकी बड़ा दिखे bird तो that's fine हाँ कुछ का ना कोले का ना ठीक है 20 and velocity gravity 0.3 थी 0.3 कर दिया ठीक है fine jump page 9 adjust jump straight okay fine तो increase ठीक है in the component return statement we have to make some changes which is referring to canvas find border 4 border blue take it on the large shadow okay width we should give 600 pixel
and height we should give 800 pixel. I don't know VS Code में कोड साइज कैसे बड़ा होता है, so I don't know if it's visible or not. Wait here. What? Font size कैसे बड़ा? Okay, editor font. Font size. It's Control comma. already 19. Control comma font size. अच्छा कंट्रोल कॉमा क्या? कंट्रोल कॉमा, कमांड कॉमा ना? तो कुछ और ही हो गया. वेट, हाँ मेरे में कमांड प्लस और माइनस से होता है. ठीक है, इतना ठीक है. हाँ फाइन, ठीक है. तो और इसने बोला कि अपडेट द CSS टू इंश्योर प्रॉपर इसकी स्केलिंग. फाइन. तो फ्लैपी बर्ड, हाँ यहाँ पे जस्ट कॉपी पेस्ट यार. आई थिंक इसने तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि दिस वॉन्ट बी एबल टू डू द थिंग, बट इसने कर दिया. तो व्हाट वी शुड आस्क हिम फॉर नेक्स्ट. वेट, we nothing, like it can write the Flappy Bird in just few minutes. बस थोड़ा सा. If you have a game idea, simple game idea, we can just give the idea and it can write the code. It's not very. Yeah, I have an idea. Let's make top down shooter. जिसमें ऐसे ऊपर like एक person like simple box which can be rotated by the mouse, और फिर वो ऐसे कहीं भी can move in all the directions or the 360 and then can shoot. It's pretty easy one to do it. Like अगर कोई experienced game developer होगा तो like of course टाइप करने में टाइम लगता है, but like half an hour में can create. अगर गेम इंजन से करते हैं तो बहुत जल्दी of course. हाँ. जंप स्टैम्प बढ़ा दी, शायद ज़्यादा बढ़ा दी. जंप स्टैम्प कम कर दे, ग्रेविटी और कम कर दे. ग्रेविटी 0 ऑलमोस्ट 0.001 कर दे. ग्रेविटी कम करेंगे और जंप स्ट्रेंथ को भी, उसको भी डिक्रीज द जंप स्ट्रेंथ एज वेल. We need to at least pass 5 pipes, then our ego will be satisfied. There's no. What the? Decrease jump size यार, decrease jump size. जंप में कुछ माइनस में कर रखा है तो हैं? हाँ ठीक है, go on. अरे 3 बार नहीं करना था. ये तो आई डोंट. कैन वी आस्क कि इसका सॉल्यूशन क्या है? कैन वी आस्क सम लाइक थोड़ा सा हैक इसमें कि वी कैन मैन्युअली कंट्रोल द स्पीड ऑफ द बॉल. मतलब जैसे कि रॉकेट नहीं होता क्या लाइक इसमें, फक यार, जैसे कि देयर इज अ गेम है ऐसे, वो उसमें ऐसे ना 2D में रॉकेट ऐसे उड़ता रहता है, उसकी स्पीड अपन कंट्रोल कर सकते हैं. तो जैसे ही मैंने 3 बार जंप कर दिया तो बॉल मेरा, तो देन बॉल बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल, तो जाके टच कर जाती है. तो ऐसे स्पीड हाथ में हो तो आई कैन लाइक डे एक्सलरेट, तो रुक जाएगा. बहुत सारे मल्टीपल मॉडिफिकेशंस वी कैन डू. कैन वी शूट बाय द बॉल while flying? इसको बोलूंगा करने के लिए. देख ये ओके फाइन. वेल इट्स वर्किंग रियली नाइस. तो मेरे को लगता है इसको अपन जो भी बोलेंगे इन द केस ऑफ फ्रंट एंड, ये विल बी एबल टू डू इट. आई डोंट थिंक कि कुछ होगा नहीं होगा. I have also used this in my personal projects and it was performing very well actually. Let's try to make him fail. Wait. Let's try to make him to fail. What we can ask यार. For the front end difficult questions क्या हो सकते हैं? Leaderboard. Leaderboard I think गूगल का जो कोड जैम होता था उसका जो फाइनल रिजल्ट होता है, जो फाइनल होता है उसका, तो द वे दे शो द रिजल्ट ना, तो प्रोजेक्टर बहुत बड़ी स्क्रीन पे
लेटर बोर्ड होता है और वो कैलकुलेशन स्कोर्स की चल रही होती है रिजल्ट। तो उसमें बेस्ड ऑन द स्कोर्स ना आपकी जो टाइल होती है नाम वाली इस पे स्कोर करा होता है, वो ऐसे है ना, ऐसे ट्रांजिशन करती रहती है ऊपर नीचे, लाइक ऐसे। ये मैंने खुद से कर रखा है, ये मैंने नेक्स्ट में किया था, आई थिंक मेरे गिटहब पे रिपोजिटरी भी है, बट शुड वी आस्क हिम टू डू दिस। और गेम के लिए ठीक है, फाइन, लेट्स जस्ट स्टिक टू द प्लान, लेट्स आस्क फॉर द टॉप डाउन शूटर। I can create a new game called top down shooting. Here's the plan. A player should be able to rotate a box. Game player rotate a box with mouse in 360 degree. Or player should be able to move the box using WASD. And You know what it is saying? I asked act as a Python developer with experience of 1,000 years. So it is saying 1,000 years of Python development means I have seen it all from the invention of print statement to the rise of AI powered code completion. सिंपल बोलना है कि फालतू सवाल ना पूछे। Player should be able to shoot with a gun. Everything can be simple enough like previous game. Create a new component, maybe component, and I will route it to flappy था ना अभी का top shooter. That's it, that's two. Okay, the user wants to create a new game, la 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 la, ठीक है. First I will need to structure the component similarly to the flappy game using a canvas element. Okay, for rotation I'll track the mouse position math.it and 2. Wow, fucking good. This is a very correct way to track the rotation with the mouse. Nice. Components, top down shooter. Let's create नया component which is I think हम इसको कुछ बहुत ज़्यादा लो लेवल पे टेस्ट कर रहे हैं क्या, लाइक इजी लेवल पे? Maybe. I think ऐसा ही है. We are not pushing. खींचना पड़ेगा इसको. I think we have to take it to the larger scale, like multiplayer game. Multiplayer server type game. Yeah. I think we are taking it very easy. ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि ये फेल ना अभी होएगा. देख अगर हमने मल्टीप्लेयर बोला बनाएंगे तो इट कैन फेल. कि नाउ टू बर्ड्स कैन फ्लाई, बट दोनों अलग अलग ब्राउजर से और दोनों अलग अलग प्लेयर से. उससे पहले वी कैन ऐड अ लेयर जहाँ पे यूजर कैन एंटर द नेम मे बी, और फिर वो नेम उस बॉल के साथ में ऐसे अटैच रहेगा, हर कर देन इट कैन फ्लाई. तो मल्टीप्लेयर वाला वी कैन ऐड द टॉप डाउन शूटर. लेट्स सी, इसने बना तो दिया, लेट्स सी कितना काम करता है. शूटर क्या करना है? कुछ नहीं करना, बट इसने जो यूआई दिया बना के बड़ा सही दिया यार. I don't know, you are amazed or not, but I am amazed. करना क्या है इसमें? What is the target of the game? टारगेट का ये अपना गेम, ये अपना प्लेयर है, और ये हमेशा इसकी गन माउस को पॉइंट करती रहेगी.
So अच्छा. basically, indirectly I can control the gun aim with the mouse. This is a top down shooting game. ये देख, ये माउस घूम रहा है तो उसका मुंह भी घूम रहा है, मतलब मान ले उसका मुंह ऐसे तो ऐसे घूम रहा है साथ साथ. इट कैन रोटेट in 360 degree. Now then it can go like this and can shoot. Mm. Can Yeah, I shoot think while this is moving. very easy for these kind of machines. नहीं Easy यार, रहेगा बट मुझे इससे क्या. पहले वाले LLM नहीं कर पाते थे यार. ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ट्राई ना किया. डू वन थिंग, इसको लेट्स ऐड मल्टीप्लेयर कैपेबिलिटीज. Mm. लेट्स गो डू दैट. प्रोड्यूस नाइस, एक बार में इसे सही बना दिया. दिस इज गुड. इजी कर तो देता है. नहीं है, बिकॉज यू नीड टू नो सर्टेन लेवल ऑफ नॉलेज. मतलब मिड लेवल इंजीनियर इसलिए कहा था मैंने क्योंकि मिड लेवल इंजीनियर कैन डू ऑल दीज थिंग्स. बिगिनर with 2 3 with 1 or 2 years experience cannot do in one go. Mm. So okay, that is working fine. Let's make it more complicated. Can we have some multiplayer support here? Here's a plan. Another user should be able to join the game from another tab. ठीक है, ये होना चाहिए ना कि दूसरी टैब से गेम में एंटर हुआ, देन with his or her name, and both the players should be able to see each other and each other's movement in real time, and if one player shoot other player should die, and we should see a game over message with the name of player who died, whatever basically. And one more thing, the name of each player should hover over it all the time in white color font as you made everything as a dark theme, which is quite good. Please provide complete support and code for the structure and everything, included libraries as well. Let's see, this is the last prompt आज के लिए. अगर everything is okay, then I can say कि मेरे like for me on the front end side it is going to be very very useful. क्या बोलता है? देखते हैं. इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए गेम्स. मतलब फ्रंट एंड में नथिंग इज इतना कॉम्प्लिकेटेड जरूरत नहीं है. पता नहीं क्यों आई एम जस्ट फीलिंग के इश्यूज होंगे. It won't be able to do it properly. Let's check. Let's see. ठीक है, इससे ज़्यादा करना तो फिर we can say कि let's scale it and let's try to simulate 1 lakh multiplayers, 1 lakh players in the same window. Do it. तो
that is like difficult of course. I never thought कि LLM जैसा कुछ भी होएगा. Like AI का पता था but इस नहीं, लेवल पे चीजें होंगी ये नहीं पता था. aware. I was aware of this thing in 2014 and 2012, 13 itself, because there at that time there was something very hot buzzwords for self-improving code. That if you write a Python code and that will improve itself over the time. The Oh. source code will be modified by itself. The program itself. So I knew that coding will be overtaken by somewhere in the machine, in somewhere in the future will be overtaken by the machine. But yeah, anyhow, it does not matter if like someone have to give the prompts. So if you are good with the prompts, your job is secured. Otherwise, yeah, number of employees will decrease certainly. इसने ये नहीं बताया कि कौन सी लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है. आई डोंट नो. socket.io.client ठीक है, UID ठीक है, मतलब बता सकता है बट इसने बताया नहीं. इट्स फाइन. बट नेक्स्ट जेस में ऐसे सर्वर चल जाता है क्या? मैंने काफ़ी टाइम से काम नहीं किया बट नेक्स्ट जेस में आई डोंट नो. लेट्स सी. हाँ ओके, बताया माय मिस्टेक. ठीक है ब्रदर, लेट्स ट्राई. आई होप ना कर पाए. आई एम नॉट इन फेवर, आई एम अगेंस्ट. कैसा नहीं होना चाहिए. लोगों की जॉब नहीं जानी चाहिए ना यार. आई थिंक बैकएंड में देयर विल बी लाइक challenges. बैकएंड में चीज़ें इतनी ईजी तो नहीं होगी. दैट आई एम प्रीटी मच श्योर. व्हाट द फक आई एम डूइंग. या so library game server ts. Okay, create a folder called lib and create game server ts. Just copy paste the code as it is. We don't know anything about it, so just copy paste it. Huh? So far, Anandak, what do you think about it? How did it perform? Useful. It is useful. Yeah, useful to have it. In what terms? For the efficiency, scalability, time saving, productivity, किस sense में useful है? I think it's most of the like I have also used in. I already said that I will test for more use cases. But for now, till now, I think it is saving me a lot of time. And unlike other LLMs, it's not giving that much of errors. Like for the last two codes, it did not give any syntax, like not even a single syntax error. Syntax error तो नहीं है. Or not even logical error कि some division by zero is happening, or library is misspelled or something. आ गए ना errors, I think. हाँ. अभी आएगा. Cannot find player. Why? कहीं define नहीं किया क्या? Now it's in the trouble. of course. कहीं define नहीं करा क्या इसने? What the fuck? Create a server.ts. Where? कहाँ बनाऊँ server.ts पे फाइल? I don't know कहाँ बनाऊँ. Maybe root में. server.ts and then scripts, load package.json, script game server, get it. ठीक है. npm run game server, ठीक है, फाइन. बट एरर है भाई. आ गया. एरर है ना कंपोनेंट्स में. ये देख इधर, UID इसने दिया बट इसने यूज़ नहीं किया. आई डोंट नो क्यों नहीं किया यूज़. UID भी इसने लिया क्यों, इसने इंस्टॉल क्यों करवाया. ठीक है, फाइन. बट यहाँ पे eat client wise and client wide does not exist on the type keyboard event. There are few errors भाई. I'll ask him. There are few errors. In component top down shooter फाइल. इस फाइल के सारे एरर्स लिख देता हूँ एक बार में, ताकि इसको पता रहे कहाँ जाके सॉल्व करना है इसको.
ठीक है, इधर है प्रॉपर्टी does not exist, fine, okay, there is no other error. Game server ts में there are some errors. Library server game server dot ts cannot find player. मैंने कहा था ना कॉम्प्लिकेटेड होते ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें खराब हो जाएंगी. ठीक है, और मूवमेंट भी नहीं है, cannot find movement. I don't know, we are missing something or he is missing something. Yeah, but we are completely relying on him, so yeah, okay. Second question, and I also want to ask where to put server.ts file. I put it in root for now. Let's see. Let me outline the steps to fix the error. इसका सोचने का तरीका बड़ा अच्छा है. The way he thinks ना, सबको सामने वाले को बता के अभी बाकी LLM है ना, वो खुद ही सॉल्व करता है, बट तो एक्सप्लेन करता है, बट इतनी डिटेलिंग नहीं होती जितनी इसमें होती है, क्योंकि ये जो सोच रहा है वो भी आपके सामने होता है. तो एक चीज इससे है कि यू कैन लर्न वेरी वेल. इससे आपको चीजें बहुत ज्यादा सीखने, बेटर वे में सीखने मिलेगी. It can teach you how to think, Yeah. how to find a If you are not get a to the solution. copy paste guy, तो this can help you a lot. और copy तो paste copy paste वालों के लिए उनके लिए तो हर LLM बेकार है. कॉपी पेस्ट वाले LLM का नाश पीट रहे हैं बस, और कुछ नहीं है. क्लाइंट कॉपी पेस्ट यार करने का भी तरीका होता है ना, आपको थोड़ा तो आना चाहिए. अभी हम काम लाइक वी आर डेवलपर, सो वी कैन डू इट. अभी बिल्कुल नल है तो कैन नॉट डू. अच्छा, रूट में ठीक है, मैंने रूट में सही रखी थी फाइल. गेम सर्वर के लिए आई थिंक इसने बोला कि स्क्रिप्ट चेंज करो. चलो, जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना तो वैसे भी इश्यूज आने लग जाते हैं. वो इवन नॉर्मल डे टू डे लाइफ में भी आते हैं. नो मैटर हाउ एक्सपीरियंस्ड यू आर, स्केलेबिलिटी इज द एक्चुअल इशू ही सारा स्केलेबिलिटी का है. scalability in terms of both the users and the code base. हाँ, कोड बेस पे जब लाइन ऑफ नंबर ऑफ लाइंस बढ़ती हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगे. क्योंकि जब तक स्केलेबिलिटी नहीं है तब तक सब कुछ मस्त काम करता है वेरी वेल. एज सुन एज यू इंट्रोड्यूस स्केलेबिलिटी, कुछ ठीक से काम नहीं करता. What the fuck, wait. You need to make changes. Can you provide the complete updated file for top down shooter component? बेसिकली अगर ये और सब कुछ ठीक हुआ तो बेसिकली वी एंडेड अप क्रिएटिंग अ मल्टीप्लेयर गेम विद DeepSeek यूजिंग nextjs एंड इट वर्क रियली वेल. अगर ये काम अच्छा किया तो दैट्स क्वाइट गुड. आई थिंक दैट्स वेरी गुड. Otherwise, I think we are moderately satisfied. We can, like, our jobs can be easily, we can offload our work. Yeah, offloading will be the like most important thing जो हम इससे करेंगे. Like the You don't need to sit in front of a laptop for 8 hours, for 9 hours, just 2 hours. Ask him, write the question, copy paste, and get the answers. you just need like keep an eye on what he's doing. वो जरूरी है. सर देखते रहना पड़ेगा इसको क्या कर रहा है. नहीं तो अभी रिसेंटली मैंने पढ़ा कुछ कि 70 गूगल क्लाउड पे किसी का बिल आया $70,000 क्योंकि पेटाबाइट्स में डेटा से सेव कर दिया उसने LLM ने, AI एजेंट ने, बिकॉज दैट गर्ल वाज यूजिंग AI कोड. उसने शी डिडंट चेक इट, उसने सीधा उसको डिप्लॉय कर दिया. तो उसने लूप में चला दिया, तो एक दिन में पेटाबाइट सेव कर दिया, तो इट वाज लाइक 70,000. और क्योंकि ये है ना, गूगल तो ऑथराइज्ड है टू चार्ज, उस पर गलती थोड़ी गूगल की, तो
गूगल ने आस्क करा है कि लाइक इफ यू डोंट पे, इफ यू डोंट पे विद इन अ वीक और लाइक 10 days, देन वो उस पर डेट की तरह चढ़ जाएगा, 70,000 USD। फक। So anyhow, तो they will. ऐसे भी नहीं कर सकते यार, It's the सीधा आंख machines बंद करके नहीं problem. करना यूज। लेट्स सी। ओ Hmm. बना दिया इसने ऑलरेडी, इज देयर, एंटर योर गेम। दो ब्राउजर खोलने पड़ेंगे ना। ओके ठीक है, आई विल डू इट फ्रॉम हियर ऑन माय अदर पीसी, अदर स्क्रीन। हाँ, चीटिंग। ओके, लोकल होस्ट, तो कोई स्क्रीन दिख रहा है क्या? मैंने क्या क्या शेयर किया हुआ है? इसका चैट ही किया। चैट किया हुआ है ना, ठीक है। फक, अभी क्या दिख रहा है? अब आई थिंक गेम वाला विंडो ना। It's coming up. Hmm. ठीक है, ज्वाइन गेम अनुराग। Hmm. व्हाट द हेल हैं? ये क्या कर दिया इसने? प्लेयर ही गायब कर Where is दिया the भाई। box? Where is the box? आई डोंट नो। प्लेयर्स ऑनलाइन 0, फॉलो माउस टू एम। हाँ, WSD भी दबा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। No, fucked up. Fucked up now. प्लेयर ही खा गया ये तो। प्लेयर्स ऑनलाइन 0, फक, एवरीथिंग इज, क्या हो गया भाई? बेटा कैसा हो गया इसका? वेट वेट वेट। Fucked up, huh? यू छोड़ रूइंड इसको, इट। अपना 1 घंटा हो गया वीडियो चलते हुए, छोड़ ठीक इसको। है, जस्ट लिख के छोड़ो, यू रूइंड इट। Ruined it. Learn first and then come here. अब तू सोचता रहा भाई, बाय। ठीक है, तो इट वाज लाइक टेस्टिंग from our side as a front end, not as a front end but as a front end developer for the DeepSeek new LLM. तो it was quite good जब तक चीज़ें easy थी। जैसे ही we started adding multiplayer functionality, इसने just ना कि इसने गेम खराब किया, इससे प्लेयर ही खा गया ही तो। ऐसा हो सकता था कि देखिए प्लेयर दिख रहे हैं, एटलीस्ट कुछ हो रहा है, नहीं, एवरीथिंग इज खत्म, ruined, completely ruined. Anyways, behind the scene, I will try to fix it and let's see if I can. Of course, इसी की help से. Now So, what is doing? what is? Trying to solve, huh? I just write you ruined it, तो इसको समझ में आ गया कि कुछ तो टकरा हुआ है, तो now you're like figuring out. The user Yeah, said, I ruined it after they asked for the complete updated troubleshooter component. Let me look back at the history to understand the context. अभी खुद ही सोच के खुद ही ठीक कर रहा है. That is scary by the way, but ठीक है. ये स्कैरी कैसे वो एक मूवी देखी थी मेरे वाली, जहाँ पे वो खुद सोच के खुद में चेंजेस कर देता है, तो इट वेंट टू द नेगेटिव साइड, तो बिकॉज इट कैन थिंक, सो इट इज स्कैरी इन फ्यूचर। अभी तो ठीक है। एनीवेज गाइस, सो this was a very rough and casual talk where we were testing DeepSeek, and we asked him to act as a front-end developer with experience of like 5 to 10 years, like not front-end but a front-end game developer, and it was pretty good unless we didn't add the multiplayer for functionality. It went really well with the Flappy Bird. It went really well for the top-down shooter single player mode, but as soon as we added the multiplayer, fucked up. That's it. So the conclusion is study hard. Abhi to it's not We both. going to. Like it also needs to learn. We also needs to learn. Yeah, we also need to learn. So break में छोटी problems it can solve. Still it cannot build a complete enterprise. That's what I was thinking. Like we can offload it, we cannot utilize it for completely. Yeah, we cannot. Like Definitely. can you just offload your load? Yeah. Anyways, so that's all for this video. Do you want to say something, or do you want to add on something? Otherwise, we can. I think I'm good. Okay. Okay. So okay, in the next video for the DeepSeek testing part 2, we will be trying. We will be asking him to act as a backend engineer, Backend. and then we will play the real game, because we both are
backend engineer. So then I think we can ask really good questions. Yep. Yep. Yeah, that will be interesting. Anyways, thank you so much for watching and see you. Thank you. Have a nice day.